Okay, so let's start. Okay, so in the last class we all learned about the last class में क्या पढ़े थे हम लोग? Sentence stress. Sentence stress. Sentence stress. Where should we put the stress mark on a sentence? Sentence stress Content words. Content word. content words and content words में क्या क्या है? Grammar words. Okay, content words Verbs, noun, क्या है? adjective. Verbs, nouns, and adjectives are known as the content one. So आई डोंट थिंक तुम्हें सेंटेंस वर्ड में कुछ भी प्रॉब्लम होगा. ओके, कंटेंट वर्ड में ना तुम लोग नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ओके, इवन द नेगेटिव ऑक्सिलरीज एंड आल्सो द डब्ल्यूएच वर्ड. ओके, दोज आर आल्सो द कंटेंट वर्ड्स. Okay, and also we have described in the last class that there are some exceptions in the sentence stress. Okay, मतलब कि ये हमेशा जरूरी नहीं है कि हम लोग हमेशा कंटेंट वर्ड पे ही फोकस करें. समटाइम्स अकॉर्डिंग टू द मीनिंग, ओके, ऑफ द वर्ड, और किसके ऊपर हम लोग एक सेंटेंस में किस पे ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं, अकॉर्डिंगली ऑल्सो वी पुट द स्ट्रेस मार्क. एंड समटाइम्स we put the stress mark particularly on the structure word also if we want to give focus upon that particular meaning of a sentence. At that time also we the concept is also changed. Okay, like in this dialogue, okay, they haven't been to Mongolia, haven't they? No, they haven't. But the be verbs, okay, sometimes it is not, okay, work as the content word. Okay, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है. ओके, डिफरेंट मीनिंग, ये भी आई होप तुम्हारा कॉन्सेप्ट ये सब क्लियर है कि कहाँ पे फोकस करने पे मीनिंग कैसे चेंज होता है. ओके, लेट्स सी टाइप्स ऑफ स्ट्रेस इन इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन. ओके, कितने टाइप के हैं हम लोग जो स्ट्रेस करते हैं वो कितना टाइप का है. ओके, so there are particularly 4 basic types of word stress. हम लोग जो वर्ड में स्ट्रेस करते हैं inside the sentence, there are 4 basic types of word stress. Okay, the first one is your tonic stress. Tonic stress क्या है? Okay, जैसे मैं बोली कल तुम लोगों को the content words, हम लोग जब भी सेंटेंस में content word होता है at that time we focus or give stress on that particular word. Okay, like the word he is waiting for his friend at the station. Okay, so waiting, friend, station. Okay, ये तीनों जो है ये तीनों हो गया तुम्हारा content word. Okay, and here you have to give the focus. And अगर time stressed के time stressed बोला जाएगा तो for his and at the, okay, means waiting, friend, station. इसी बीच के अंदर तुम्हारा जो गैप है वो इक्वल रहना चाहिए. मीन्स लाइक यस्टरडे वी हैव प्रैक्टिस द रिदम 1 2 3 4 1 2 3 4. सो यहाँ पे वेटिंग, फ्रेंड, स्टेशन, ये जो है बीच, मतलब कि जो हाउ द वे यू प्रोनाउंस, सो दैट ये जो प्रोनाउंस करते टाइम इनके बीच में जो गैप है, ओके, वो इक्वल होना चाहिए. ओके, अकॉर्डिंगली यू हैव टू pronounce. Okay, so when you put the stress mark particularly on the content word, okay, at that time that is known as your tonic stress. Okay, in tonic stress also when I teach you about intonation, at that time will be a little bit more clear about this tone. Okay, why the means accent is changed or the pitch is changed in tonic stress, that at that time I explain. Okay, then there is another type of stress is there, that is the empathetic stress. Okay, empathetic. Okay, empathetic में क्या होता है ना, when we give, okay, particularly like हम लोग अभी फोकस किए कि when we speak something we give particularly on the content words. Okay, but sometimes ये जो emphasis क्या होता है ना, it change the stress. Okay, means I give important to the adjective. Okay, for example, that was a difficult test. Okay, that was a difficult test दे रही हूँ, that was a difficult test. नैनाली हमें हम लोग जब भी बात करते हैं तो पूछते हैं ना कि ओके एग्जाम थोड़ा
मतलब कि डिफिकल्ट था, दैट्स ऑल। ओके, लेकिन जब हम लोग ज्यादा इंपोर्टेंट देते हैं कि बहुत मुश्किल था जब होता है, ओके, एट दैट टाइम वी गिव इंपोर्टेंस टू द एडजेक्टिव। सो व्हेन द स्ट्रेस that moves from noun to adjective, at that time that is known as your empathetic stress. And in empathetic stress particularly, okay, there are some adverbs, okay, that works as the modifiers, for which reason we give importance to particularly that word, okay, like extremely, terribly, completely, utterly, especially, okay. सी इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, ओके, दैट मीन्स सुंदर तो है लेकिन एक्सट्रीमली में जब बोल रही हूँ तो ज्यादा इंपोर्टेंट ब्यूटीफुल, ओके, दैट मीन्स जो मुझे ब्यूटी को एक्सप्रेस करने के लिए ज्यादा द वर्ड आई यूज, ओके, एंड आई पुट अ स्ट्रेस देयर, ओके, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, ओके, सो दिस इज नोन एज योर एम्पैथेटिक स्ट्रेस, जहां पे हम लोग क्या करते हैं, नाउन के ऊपर न करके स्ट्रेस कहां पे आ जाता है, तुम्हारा एडजेक्टिव के ऊपर आ जाता है, ओके, और द एडजेक्टिव, ओके, मॉडिफाइज द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, ओके, एट दैट टाइम दैट इज नोन एज योर एम्पैथेटिक स्ट्रेस, ओके। देन देयर इज अनदर टाइप ऑफ स्ट्रेस दैट इज द contrastive stress, okay. Contrastive stress means particularly sometimes it is also used as contraction, okay, high, low, okay, when there is the contrast between two words and we use that in the sentence, that is also known as the contrastive stress. But particularly the contrastive stress, it is actually used, okay, to point out the difference between one object and another. दो object के अंदर जो difference है इसको चेंज करने के लिए और इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग जनरली कंट्रास्टिव स्ट्रेस यूज करते हैं, ओके। एंड ये पर्टिकुलरली किसके लिए होता है, जैसे एम्पैथेटिक स्ट्रेस एडवर्ब एंड एडजेक्टिव के लिए हम लोग यूज करते हैं, ये जो कंट्रास्टिव स्ट्रेस वी यूज इट फॉर द डिटर्मिनर्स लाइक दिस, दैट, दिस, समझ में आ रहा है। एम्पैथेटिक स्ट्रेस वी यूज for the adjectives or the adverbs, but contrastive stress we use it for the determiners, means these, that, these, those, okay। and ये क्या करता है ना here, और so there are so many doors and you indicating a particular door and you are telling that I prefer this door, okay, that means मुझे यही वाला door ही चाहिए, okay। or you can say do you want these, do you want these or those curtains, okay, that means again यहाँ पे तुम लोगों का ज्यादातर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन रहता है, मीन्स तुम कहीं पे हो, ओके, एंड यू आर इंडिकेटिंग तुम्हारे पास एक चीज है एंड दूर एक चीज है, तो व्हाट पर्टिकुलरली यू वांट, अगर मैं तुम्हें तुम्हारा ऑप्शन पूछ रही हूँ कि तुम्हें क्या पसंद है, बट व्हेन आई पुट स्ट्रेस मार्क ऑन दोज कर्टन्स इट इंडिकेट्स दैट मुझे ये वो दोज वाला कर्टन जो है, दूर वाला जो कर्टन है वो पसंद है, I like those curtain, but what is your choice, okay? So I ask you or giving stress, you want these or those curtains, तुम्हें ये वाला चाहिए या वो वाला चाहिए, मुझे जो मुझे पसंद है, the indication, okay, as we already described, I have already described it in the sentence stress, that when we speak the English word we put stress to emphasize something, okay, and sometimes because of this emphasis the meaning of the particular sentence totally changed. If I say do you want these, okay, or give stress mark on the word these, then indicating that I like these cottons which are nearby me, okay, and you, but you may like those cottons also, so I give emphasizing particularly on these words, okay. So do you want these curtains, okay, or if I say you want these or those curtains, so this is known as your contrastive stress, okay। and in contrastive stress particularly ये क्या करता है ना, slightly change the meaning, as I have already mentioned that contrastive stress, when we use the contrastive stress it change the meaning of the meaning of the sentences, sentence का meaning पूरा change हो जाता है, like if we say the word he came to the party yesterday, यहाँ पे importance किस में दिया गया है, he के ऊपर है, importance जो है वो he के ऊपर है, एक मिनट, हाँ,
he came to the party, मतलब कि हम लोग I give the importance to particular one person, I give importance to he. Okay, यहाँ पे मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ. He means I am indicating something or I know some person. Okay, I am telling that he came to the party yesterday. Okay, instead of focusing anyone else, क्योंकि मुझे डाउट था कि वो आएगा नहीं आएगा. ओके, लेकिन वो आया था. और यू आस्क मी अ क्वेश्चन दैट यस्टरडे, लाइक यस्टरडे एक पार्टी हो रहा है एंड तुम्हें भरोसा था कि ये नहीं आएगा. लेट इट बी कि जैसे कि मैं बोली कि यशबीर कल क्लास में आप क्यों एब्सेंट थे. ओके, तो व्हेन आई गिव एम्फासिस, okay, when I say Yasbir, at that time obvious thing है, it is a content word, so I give the stress mark there. Okay, but when somebody tell me that ma'am he was present yesterday, okay, because of the network issue, the thing is that he was not able to give the attendance. Okay, so when you are telling that he was present yesterday, okay, that means you are giving importance that it is he. Yasvir was definitely there. Okay, okay, then if I use the next sentence that he walked to the party yesterday, यहाँ पे स्ट्रेस कहाँ पे हो रहा है, walked में हो रहा है. तो वॉक में अगर स्ट्रेस हो रहा है, इसका मतलब क्या है, जो पार्टी में वो कल आया था वो क्या करके आया था, चल के ही आया था. ओके, नहीं कि कार में आया था या फिर किसी और के साथ आया था. नो, ही वर्कड टू द पार्टी यस्टरडे. पूरा एम्फासिस क्या है, ना कि वो चल के आया था. मे बी उसका गाड़ी खराब था, मे बी उसके पास उसका बाइक नहीं था, फॉर दैट रीजन वो चल के आया था. सो आई गिव इम्पोर्टेंस टू वर्कड हियर. ओके, then if I give the importance or stress mark on party, he came to the party yesterday. Okay, and when I say he came to the party yesterday, that means I am telling that he was coming to the party, not any meeting or any other gathering. Okay, because maybe sometimes what happens, there are some persons they don't like the party. Okay, they don't like the gatherings and all those things. So if, and our expectation is that that person definitely he definitely not come or attend that party. But if that person join the party, so obvious thing here, we are quite surprised. And when we speak the word, okay, we put emphasis particularly on that he came to the party yesterday. Party, okay, we just underline the word party. Sometimes when we use all these things in our own mother tongue, we just say, okay, party. Okay, so he came to the party yesterday means he was joining the party, not anything else. Means my total focus is party. Here I am not giving importance he. Okay, वो आया था, क्या आया था पता नहीं, लेकिन वो पार्टी में आया था, जो कि वो कभी नहीं करता है. ओके, कैसे आया था, दैट इज ऑल्सो नॉट इम्पोर्टेंट कि कैसे आया था, कि कोई उसको छोड़ के गया, बैठ के गया, वो पता नहीं है. लेकिन हाँ, वो कभी पार्टी में नहीं आता है. एंड कल जो था वो कल पार्टी में आया था. फॉर दैट रीजन यहाँ पे हम लोग क्या, पार्टी के ऊपर आई गिव द एम्फासिस ऑन द वर्ड पार्टी. ओके, देन इफ आई से ही केम टू द पार्टी यस्टरडे. ओके, यस्टरडे मतलब मैं यहाँ पे इंडिकेटिंग कर रही हूँ यस्टरडे के ऊपर. मतलब यहाँ पे अगर बोला जाएगा तो मे बी दैट पर्सन, ओके, वाज वेरी बिजी. ओके, वो बहुत बिजी था, तो डेफिनेटली उसके आने का चांसेस बहुत कम था कल. लेकिन वो कल आया था. ठीक है, तो यहाँ पे इंपोर्टेंस क्या होगा ना, कल, यस्टरडे. ओके, मतलब कि आई एम नॉट टेलिंग अबाउट द डे बिफोर यस्टरडे और द लास्ट वीक or on Monday, Tuesday. Okay, I'm focusing upon yesterday because yesterday it was that person was too busy, still he joined the party. Okay, so if you focus upon that, then in the sentences sometimes according to our means it depends that while we are speaking on which thing okay, so when particularly we give the importance on he. Okay, though it is a functional word or a grammar word, but as my main focus is upon that person. Okay, and it is the contrastive word, it is a contrastive case. Okay, contrast, you know, the opposite means definitely he that person, he or she or that person doesn't like, or we are 100% sure that that person
will never come and join the party, but that person, okay. Then if again when I put the emphasis on work, then obvious thing that how that person joined. Here the important point is not he was busy, he was free, he like it, he not like it, it is not the matter, but the point is that how he came to the party, that is the important thing that I focus. For that reason my focus or my stress is on work, okay. So likely when we give importance to a particular word of a sentence, that at that time that comes under your contrastive stress. Like if you remember the yesterday's video, yesterday there we find a sentence, I have but a red pen, okay. So when I say I have but a red pen, that means I give importance to a, okay, and a means one. I have bought only one red pen, not more than that, okay. If I say I have bought a red pen, what is the meaning of this? If I say I have bought a red pen, what is the meaning of this? इसका मीनिंग क्या है? एक रेड पेन खरीदा. I have only bought red pen, Not not other, blue or other. Yes, or other not color. blue or green. Okay, I have only bought red pen, not blue or green. If I say if I have read a red pen, what is the meaning of this? I I have have bought a a red. red I have a pen. pen, Buy not a any pen, pencil not or any color pencil. Yes, okay. The focus is upon the pen. Means I have bought a pen. I have not bought any pencil or Color the pencil. eraser or the sharpener or color pencil. Okay. If I say I have bought a red pen, what is the meaning of this? I have bought I have means I bought not borrowed from anyone. Yes, I am not borrowed or stole it from anyone, but I have bought this pen. Okay, so accordingly, that is known as your contrastive stress. Okay, then there is another type of stress is there, that is known as the new information stress. Means when you want to give some information to someone, at that time also you put the stress mark on a particular word, okay. Like that is, where are you from? I came from Bhubaneswar in Odisha. Means as I am focusing upon Bhubaneswar, that means my information is that I am from Bhubaneswar. It is in Odisha, okay. Definitely it is not Kotak or Dhenkanal or any other places, but it is from Bhubaneswar, okay. Then what do you want to do? What do you want to do? I want to go bowling, okay. That means I'm not interested for batting, but I'm interested for bowling, and I will do the bowling. When does the class begin? The class begins at 9 o'clock. Okay, so when you give a particular information, at that time also we give a stress mark particularly on that day. Okay, like sometimes in our common sense sentences also. Okay, meet me tomorrow at 7 p.m. Okay, so when I want to tell you meet me tomorrow at 7 p.m. and I want that at 7 p.m. you have to come, so I have to give emphasis on 7 p.m. So meet me tomorrow at 7 p.m. Okay, the 7 p.m. is a stress. Okay, I put emphasis on 7 p.m. That means that is the information I want to give. Okay, so this is all about your stress in your sentences. Okay, what are the stress? Okay, these are the stress in the sentences, and according to the stress the words may change. Okay, okay, in the exercise 1 it is written, keeping in mind the guidelines regarding stressing of words in sentences, underline the stress words and encircle the weak words in each of the following sentence. Get the question? Question कौन अछि? Yes, ma'am. Stressing of a word in sentence on weak words. कौन करिबो? क्या करना है तुम लोगों को? क्या करना है? सुनते नहीं हो, और एक बार बोलो, ठीक है. Keeping in mind the guidelines regarding stressing of words in sentences, underline the stressed words and encircle the weak words in each of the following. You have to do exercise 1 and exercise 2 also. Okay, you have to do exercise 1 and exercise 2. We will discuss that in the next class. ठीक है?
Okay, समझ में ma'am. आ रहा है नहीं आ रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Alright. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, देन आते हैं द वीक फॉर्म्स. ओके, जनरली एज हम लोग अभी पढ़े, सेंटेंस स्ट्रेस कहाँ पे करते हैं ना, स्ट्रेस सेंटेंस स्ट्रेस कहाँ पे करते हैं ना, जो कंटेंट वर्ड होते हैं एंड जो फंक्शनल वर्ड और स्ट्रक्चर वर्ड होते हैं, वहां पे हम लोग क्या करते हैं ना कि स्ट्रेस नहीं करते हैं. ओके, एंड दैट इज नोन एज द वीक फॉर्म्स. ओके, दिस फंक्शनल वर्ड्स देयर आर एज द comes under your closed class, or they are comes under your weak forms. And why these weak forms are there in the sentences? Okay, as we are telling that, okay, if only content word is there, okay, then also we can understand the sentence. Then what is the importance of these weak words in a sentence? फिर ये weak words क्यों चाहिए? Okay, as हम लोग डिस्कस किए कि इंग्लिश इज ए टाइम स्ट्रेस्ड लैंग्वेज. ओके, इट इज अ रिदम लैंग्वेज, एंड टू क्रिएट दिस रिदम, ओके, ये जो म्यूजिक है, ये जो बीट है, ओके, सॉफ्ट बीट, हार्ड बीट, ओके, ये जो वीक फॉर्म्स है, ये है सॉफ्ट बीट. ये बीट लाने के लिए ही वर्ड्स का वीक फॉर्म दैट अवेल इन द इंग्लिश लैंग्वेज. ओके, दैट मीन्स द अनस्ट्रेट syllables, okay, in the speeches that form the weak pronunciation. Weak pronunciation means what? Now, when we pronounce the word, we are not focusing it, okay, we just pronounce it lightly or in the weak form. Like yesterday, there is a music 1, 2, 3, 4. Okay, after that, there is a sentence 1 and 2 and 3 and 4. 1 and 2 and 3 and 4. 1 and 2 and 3 and 4. Okay, so when I say 1 and 2 and 3 and 4, okay, actually the word is and. Okay, but and is not clearly pronounced. The D is silent. Okay, then there is a sentence 1 and a, 2 and a, 3 and a, 4. Okay, but why do you pronounce? What is that? 1 and a 2 and a 3 and a 4 means do and a. It is very quickly pronounced to keep the rhythm. Okay, जो beat होते हैं, rhythm होते हैं. If you remember the music again, okay, you can easily guess to keep the rhythm. हम लोग जब गाना गाते हैं अपने ये में, हिंदी हो या उड़िया हो, जिसमें भी गाना गाते हो, तो उसमें जो तुम्हारा होता है ना सुर ताल, जिसको बोलते हो तुम लोग, ओके, उसमें उसी को मेंटेन करने के लिए ये जो वीक फॉर्म्स ऑफ द वर्ड, इट हेल्प्स अ लॉट. ओके, एंड दिस वीक फॉर्म ऑफ दिस वर्ड्स, ओके, these are the always used in the unstressed position. Okay, and it is only important because it gives rhythm to the sentence. Okay, and ये जो functional words क्या है, कल लोग हम लोग पढ़े थे, जितने सारे pronoun से, preposition से, conjunction से, auxiliary verb से, okay, all these are your the functional words Weak of the forms. grammar words. Means if I say he, she, they, or in, between, and, at, okay, or and, on, sorry, and, but, not only but also, okay, or the auxiliary verbs like have, has, okay, is, am, these are known as your weak forms. Okay, but in English, okay, sometimes what happens, these words, okay, like the I say the determiners here, okay, determiners of quantifiers, these are always used as a weak form. but क्या होता है, मैं जैसे बोली सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है. जैसे आई हैव बॉट अ रेड पेन, ओके, अगर उसको मैं फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में लिखूंगी, ओके, अगर स्ट्रेस वर्क दी हूं तो पता ठीक है, लेकिन अगर फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में लिखूंगी तो कैसे होगा? ओके, कैसे पता चलेगा कि ये वीक फॉर्म में है या स्ट्रॉन्ग फॉर्म में है? सो व्हेन आई ट्रांसक्राइब इट, एट दैट टाइम द ट्रांसक्रिप्शन इट चेंजेस, लाइक द वर्ड द, ओके, द का डिक्शनरी ट्रांसक्रिप्शन ऐसा है द, ओके, उल्टा ओके, ऊपर एक लाइन रहता है द, इमेजिन करो, ओके, एंड ई में लॉन्ग डॉट है दी, ओके, वी प्रोनाउंस इट दी, ओके, बट जब उसको शॉर्ट प्रोनाउंस, राइट प्रोनाउंसिएशन, ओके, एक्चुअली द राइट प्रोनाउंसिएशन इज डिपेंडिंग अपॉन द सेंटेंस स्ट्रक्चर. अगर सेंटेंस में आई गिव इंपोर्टेंस टू दैट थिंग, ओके, or that particular word, then I have to give emphasis and I have to say it is the. But okay, as
I am speaking a normal sentence. At that time, the word is pronounced as the. It is not the. समझ में आ रहा है? द Yes, कैसे ma'am. कहाँ पे यूज करोगे? दी कहाँ पे यूज करोगे? Yes, ma'am. ओके, Yes, लाइक ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. okay, if I say the pen, okay, the pen means already you know कौन सा पेन है, okay, but I say the pen, okay, that means naturally I am not telling something, okay, so I am not giving emphasis particularly to that pen, ठीक है, like that our a and an, okay, a का जो है डिक्शनरी का ट्रांसक्रिप्शन है a and an, okay, but जब हम लोग उसको सेंटेंस में यूज करते हैं, पढ़ते हैं, एट दैट टाइम इट इज उल्टा ई, एंड उल्टा ई को मैं क्या बोली थी? इट इज अ वीक फॉर्म, इट इज स्व फॉर्म ऑफ द वर्ड, स्व फॉर्म, इसको स्व बोला जाता है, एस एच ए डब्ल्यू, ओके, ऑन अ, ठीक है, तो इसको तुम लोग अगर मतलब कि जब भी यूज करोगे, ओके, सो हम लोग उसको ए ऐसे नहीं प्रोनाउंस करेंगे, ए ऐसे प्रोनाउंस नहीं करेंगे, ओके, ओपन, ओपन, ओके, पेन, देखो पेन हो गया तुम्हारा कंटेंट वर्ड, ओके, उसके पहले वाला जो है उसको मुझे एम्फसाइज करना नहीं है, तो ओपन, तो पेन हो गया, ए का क्या हो गया? अ, और बहुत छोटा सा आया, तो अगर आई प्रोनाउंस द वर्ड्स लाइक दिस, डेफिनेटली न्यूट्रल साउंड आएगा या फिर नेचुरल साउंड आ जाएगा, ठीक है, सम, ओके, सम हम लोग ऐसे बोलते हैं, लेकिन इट इज सम, ओ साउंड बीच में सुनाई नहीं देगा, ओके, सम, सम, ठीक है, लाइक दिस, टेक द एग्जांपल ऑफ दिस प्रोनाउंस, ओके, तो प्रोनाउन में स्ट्रॉन्ग फॉर्म क्या है? हिज, ओके, एंड वीक फॉर्म क्या है? इज, वीक फॉर्म क्या है? इज, ओके, ओके, जैसे कि वर्ड हुआ हर, ओके, हर, एच आर, हर तुम पढ़ते हो, रॉ साउंड आता है, अभी हम तुम लोग को क्या है ना कि हम लोग आरपी प्रोनाउंस के ऊपर फोकस करेंगे, हम रॉ साउंड नहीं करेंगे। कैसे प्रोनाउंस करोगे? बोलो, हर कैसे प्रोनाउंस करोगे? कैसे प्रोनाउंस करोगे? हाँ। हाँ, मतलब कि यहाँ पे हाँ। देखो, यहाँ पे सिंबल लिखा है, अ पे लॉन्ग अ साउंड आएगा, ठीक है, तो कैसे करोगे? ह साउंड, ओके, ह, लेकिन शॉर्ट होने पर क्या होगा? ह और अ और खाली अ, ओके, जस्ट राइट अ सेंटेंस हियर, आई जस्ट राइट अ सेंटेंस, okay, can you read it? I gave it to her. I gave it to her. I gave it to her. I gave it to her, okay, हाँ. रॉ साउंड नहीं आएगा, ओ साउंड भी नहीं आएगा, आई गेव इट टू अ, आई गेव इट टू अ, ओके, ह अगर आएगा तो ओनली एच साउंड आएगा, ई वाला साउंड नहीं आएगा। हम लोग के पहले कैसे पढ़ते थे? आई गेव इट टू हर, ओके, सो अभी क्या करना है तुम लोगों को? जब भी प्रोनाउंस करोगे, रॉ साउंड साइलेंट रहेगा, ई साउंड भी साइलेंट रहेगा, ओके, आई गेव इट टू हर, ठीक है, ओके, Yes, ma'am. सेम थिंग इज लाइक यू, योर, ओके, सी, he, we, them, okay, us, but कब कब करना है? जब हम लोग एम्फसाइज करेंगे सेंटेंस में, जैसे कि हम लोग बोले ही का एग्जांपल लेके, दैट क्या था? हाँ, he came to the party yesterday, he came to the party yesterday, at that time ही का क्या होगा ना? स्ट्रॉन्ग फॉर्म आएगा, मतलब कि एच ऑन लॉन्ग आई फॉर्म आएगा, लॉन्ग ई फॉर्म आएगा। मगर मैं जब बोलूंगी तुम लोगों को he walked to the party yesterday, okay, he walked to the party yesterday, at that time he क्या आएगा ना? तुम्हारा जो वीक फॉर्म आएगा, वीक फॉर्म मतलब कौन सा वाला सिंबल आएगा तुम्हारा? खाली आई वाला सिंबल आएगा, he come to the party yesterday, ठीक है। जब मैं फोकस की, समझ में आ रहा है? तो जब मैं फर्स्ट वाला सेंटेंस पढ़ रही हूँ तब क्या बोली? ही केम टू द पार्टी यस्टरडे, मगर सेकेंड में मैं उसको इंपोर्टेंस नहीं दे रही हूँ, दैट इज
structure, sorry, structure word or function word. So he walked to the party, he walked to the party yesterday. ओके, तो हॉक वाला साउंड जो है ये ई वाला साउंड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, लाइक दैट वी, देम, ओके, अस, ओके, अस का प्रोनाउंस होते होते लास्ट में खाली स साउंड आएगा, ठीक है, like another words are also there like the conjunctions. ओके, कंजक्शन का तो बेस्ट एग्जांपल कल हम लोग देखे थे कंजक्शन में जो एंड वाला ए आना 2 आना 3 आना 4, ओके, ड साउंड ऐसे भी हम लोग जनरली प्रोनाउंस नहीं करते हैं, एंड कम समटाइम्स द इंग्लिश पीपल दे प्रोनाउंस इट ओनली द नो साउंड, ओके, आई एंड ही, okay, here they only pronounce the no sound, there is no n and d sound, okay, like bread and butter हम लोग ऐसे बोलते हैं ना, that is actually bread and butter, bread and butter means only no sound is there, वहां पे बीच में खाली नो साउंड आएगा, यहाँ पे एंड वाला जो साउंड है वो नहीं आएगा, मतलब कि हम लोग क्या प्रोनाउंस करते हैं ए एन डी क्लियरली, मगर खाली एन वाला प्रोनाउंस करो ब्रेड एंड बटर, वो pronounce it bread and, yes, bread and butter. bread and butter, okay, so you have to pronounce, when you pronounce the words you have to pronounce the word like that, okay, the form is like that, bread and butter, okay. Yes, ma'am. Then okay, but okay, that these are the things, just you should go for all these things because it is quite helpful for you while you are transcribing the words, means like in the exam also you get the question transcribe the words, so if you go through this, okay, particularly for dictionary transformation you have to go for the strong forms, but in the sentence you will have, okay, which part of like the auxiliaries verb can, could, have, has, okay, can, could, have, has, okay, and at that time you basically you have to use the weak forms, okay. Yes, ma'am. Okay, so if I pronounce the word like एक minute, if I write the word okay, how you pronounce this word, pronounce it, it is have is in the weak form, so pronounce it, Have you finished? yes, Have you finished? Have you finished? ओके, हम लोग जनरली पूछते हैं हैव यू फिनिश्ड, ओके, लेकिन वीक फॉर्म में हाफ का जो है एच वाला साउंड नहीं आएगा, अभी Have you finished? यस, हैव यू फिनिश्ड, ओके, यहाँ पे खाली भ और अ भ साउंड आएगा, हैव यू फिनिश्ड, ओके, मतलब कि ह जो है वो टंग के अंदर रह जाएगा, ठीक है, Yes, ma'am. ओके, इसको अगर प्रोनाउंस करोगे तो कैसे करोगे, यहाँ पे सॉम जो है यहाँ पे तुम्हें एम्फासिस देना है ये वाला सेंटेंस में, ये वाला नेचुरल सेंटेंस है, तो फर्स्ट वाला को कैसे प्रोनाउंस करोगे, मैम किसमें एम्फेसिस देना है सम को? मतलब कि यहाँ पे जो है ये लॉन्ग फॉर्म में आएगा, इसमें शॉर्ट फॉर्म में, वीक फॉर्म में, हाँ, तो फर्स्ट में लॉन्ग फॉर्म में आएगा तो कैसे बोलोगे, I have got some.
I have got some. Okay, then second में Have some more coffee. okay, I have some more coffee. Okay, in the Have first, some more coffee. yes. Okay, so in the first one, इन द फर्स्ट वन, ओके, यहाँ पे जो अ साउंड है ये उल्टा भी वाला साउंड आएगा. ओके, सम. बट जहां पे मैं मतलब कि नीचे में जो है ये में अ जो साउंड है ये उल्टा ई वाला साउंड आएगा. हैव सम मोर कॉफी. ओके, बिकॉज यहाँ पे मैं इंपोर्टेंस कहाँ पे आएगा, ये कंटेंट वर्ड है, नेचुरल वर्ड है, तो यहाँ पे तुम्हारा स्ट्रेस आ जाएगा. ओके, लाइकली यू हैव टू put the stress mark or sorry pronounce the word in its weak form and strong form. Just try to go for all the words, okay, and remember the transcription of these words. Okay, বুঝি পারছো? Okay, ma'am. Okay. Okay, if I write the sentence like this, where should I put the stress mark? सेंटेंस नॉर्मल है, जस्ट फॉरगेट अबाउट वीक फॉर्म एंड स्ट्रॉन्ग फॉर्म. आई विश आई कुड, यहाँ पे स्ट्रेस मार्क कहाँ पे दोगे? Wish. विश Good. Could में. विश एंड कुड. ओके, आई विश आई कुड. ओके, अनदर वर्ड. यहाँ पे What? Interesting. 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 And story. व्हाट, तापरे Interesting. Interesting. इंटरेस्टिंग, तापरे Story. Story. सेंटेंस स्ट्रेस रे भी स्ट्रेस मार्क टा सबले इन्वर्टेड पोजी गोटे खाली जस्ट ऊपर गोटे सिंगल छोटो गारटे हला. someone is telling that it is an के कहला, someone is telling an is not the content one, it is a functional word. हम एबे पढ़िले बना, and ता short form रे रहबो सबले. Okay, so here the stress is on what? Interesting story. Okay, the last one, you could यहाँ पे you पॉइंट could लिखा है ठीक है मैम. would make a point of telling him. You could make a point of telling him. Point में एक स्ट्रेस हो गया मैम. Point में एक स्ट्रेस होगा. Then Telling. You telling. other You could. no, Would. यहाँ पे make पे होगा. Make. Make point telling. Okay, समझते बुझी वाला तो सेंटेंस स्ट्रेस, or Yes, any ma'am. doubt is there still now? No doubts. Okay, so I hope, okay, regarding sentence stress it is clear. Regarding word stress it is also clear. I think you have a little bit problem with the transcription of the particular word. वहां पे थोड़ा प्रॉब्लम होगा ना, या हो गया तुम्हारा डाउट क्लियर ट्रांसक्रिप्शन में? मैम थोड़ा प्रैक्टिस करने से होगा सर. ओके, रिगार्डिंग स्ट्रेस तुम्हें थोड़ा प्रैक्टिस, सॉरी ट्रांसक्रिप्शन थोड़ा प्रैक्टिस करना है. ओके, I will try to give you some more questions regarding transcriptions, other tricks also, that for which word particularly the o sound, e sound, dot, like हम लोग जब consonant cluster पढ़ रहे थे at that time हम लोग वही प्रॉब्लम हम लोग फेस किए थे. ओके, that where should we put do sound is there or to sound is there, jaw sound is there, just like a books. Okay, though it is pronounced as saw sound but the symbol is z. Okay,
हम लोग वही देखे थे, तो उसको थोड़ा प्रैक्टिस, जैसे मैं बोली हूँ ये रिदम है, तो कहाँ पे वॉइस राइज करोगे, कहाँ पे डाउन होगा, कहाँ पे राइज करोगे. ओके, आज योर कॉन्सेप्ट इज क्वाइट क्लियर रिगार्डिंग द सेंटेंस स्ट्रेस. इट इज नाउ इजी फॉर यू टू फॉलो द इंटोनेशन इन अ सेंटेंस. ओके, बट रिगार्डिंग इंटोनेशन हम लोग उसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. ठीक है. Yes. And उसके Okay, ma'am. Yes, ma'am. लास्ट में क्या रहेगा, प्रोब्लेम Okay, ma'am. साउंड्स. क्या क्या प्रोब्लेम साउंड है जो हम लोग के मदर टंग में है, उनका नहीं है, सो वी फेस द प्रॉब्लम. जैसे डॉट, टॉस, भ साउंड. ओके, दोज आर द प्रॉब्लम साउंड्स. इफ एनीवन हैज एनी डाउट यू मे आस्क मी. ओके, बट you have to do the lab activity, exercise 1 and exercise 2, from page number 29, accent in speech, lab activity 7. इसको अपने कॉपी में कर लेना. ओके, नेक्स्ट क्लास में हम उसको डिस्कस करके फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे. पेज नंबर कितना बोले? पेज नंबर 29, लैब एक्टिविटी 7. लैब एक्टिविटी 7, पेज नंबर 29. ठीक है. Okay, ma'am. Yes, ma'am. Let me take the attendance first. ओके, सुब्रत मंडल. Present, ma'am. अमन. Present, ma'am. हासन. हासन absent. अरुण प्रेजेंट थिला. दीपक. दीपक. रुलवान. मैम प्रेजेंट ला ता मोबाइल स्विच ऑफ हो जाए. ओके. अभिनंदन रो. आज्ञा मैम. ओके. हाँ मैम, 2, अभिनंदन. Yes, okay, ma'am. 3, Present, ma'am. 4, 5,